you're happily working in an organization, performing extremely well, delivering expected results. So in short, you're a rock star employee. And suddenly you get to know that your company needs similar skills in the US. Interesting, isn't it? That is where L1 visa comes into picture. L1 visa is your golden ticket to enter US on working authorization. Need to know how? Stay tuned. I'll explain you in details. Hello guys, welcome back to my channel, The US Immigrant. आप देख सकते हो, it's a good sunny day. So on this beautiful sunny and bright day, thought to sit beside the pool of my community and make an insightful video for you guys. So chalo, let's get going. In my last video, I received one of the comments, you can see here, and requested me to create a video, a detailed video on L1B visa. And basis that, I also created my YouTube shorts. You can see the YouTube shorts again over here. So in that, I committed that I will create a detailed video on L1B visa. So here I am. So today I'm going to explain you the entire detail of the family tree of L1B visa. But just not L1B, because when you talk about L1B, it is the family tree or the hierarchy of L1. So today in this video, I'm going to explain you what is L1 visa, what are the different types, what are the advantages, so that our other audience who are eager to know the entire hierarchy of L1, what is it, what are the different types, what are the benefits and how do I apply, they will also be benefited. So let us understand L1 visa first. तो ये L1 visa होता क्या है? Unlike H1B, it is a continuation of home office country to the US. इसका मतलब क्या होता है कि एक बार आप L1B वीजा मिल को तो आपको आपकी कंपनी इंटरनल ट्रांसफर कर सकती है यूएस में. सो एट द एंड ऑफ द डे जब ये प्रोसेस हो जाती है, एट द एंड ऑफ द डे यू आर स्टिल दैट एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट नाउ यू विल बी वर्किंग आउट ऑफ यूएस. दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ हैविंग L1B वीजा. सो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? L1B वीजा या L1 वीजा मिलता कैसा है? पहला तो आप एक तो मैनेजरल लेवल पे चाहिए, या यू हैव टू बी एन एग्जीक्यूटिव. आपके कंट्री में, आपके टीम में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में यू हैव टू बी एन एग्जीक्यूटिव. सो एग्जीक्यूटिव मीन्स यू आर मैनेजिंग ए टीम, यू आर मैनेजिंग ए डिपार्टमेंट, यू आर मैनेजिंग अ फंक्शन. तो ये एक एलिजिबिलिटी होती है. दूसरी एलिजिबिलिटी होती है आपके पास एक स्पेशलिस्ट स्किल्स होना चाहिए, स्पेशलिस्ट नॉलेज होना चाहिए एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस या पोर्टफोलियो. That is one of the criteria you become eligible to apply for L. So now that we have understood what is L1 visa, we'll see what are the two types of visa. So majorly यहाँ पे दो type of visa होते हैं. एक होता है L1A visa, एक होता है L1B visa. So पहले हम देखेंगे L1A visa क्या होता है. So यहाँ पे आप देख सकोगे, एडिटर साहब ये थोड़ा एडिट कर दो. So L1A visa में you can see over here. So सबसे पहले आपका रोल. So first of all, your role has to be either you have to be responsible for managing a department, a function or a team. तो आप managerial role पे चाहिए या आप एक executive चाहिए. So that is your role, so that you can become eligible for L1A. Second parameter होता है green card path. एक बार आप L1A वीजा पे आ गए तो आपका ग्रीन कार्ड का पाथ जो है वो थोड़ा फास्टेस्ट वे से होता है. सो इट्स अ फास्टर रूट. आपका ग्रीन कार्ड इज कंपैरेटिवली फास्टर देन एनी अदर, क्योंकि आपको लेबर सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है. सो अगर लेबर सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सो इट कैन रेंज एज सून एज 18 months टू probably 2 years. दैट इज ऑन ग्रीन पाथ. थर्ड चीज विच इज ड्यूरेशन. सो L1A वीजा आता है with a duration, a maximum duration of 7 years. It starts with 3 years and then it renews for 2 + 2. So 3 + 2 + 2, which is 7 years. Now we'll see L1B visa. L1B आप यहाँ देख सकते हो. So first होता है role. So either an L1B visa has to be an individual contributor but with a very specialist knowledge. It can be knowledge, skill, technology, product, service, anything which is very precise and very specialized knowledge. तो आप eligible हो जाते हो. Second है आपका green card का जो path है वो. So it is similar to H1B visa. H1B visa के लिए आपको लेबर सर्टिफिकेशन लगता है और एक बार आपको ग्रीन कार्ड के पाथ पे जाना है तो आपको EB2 या EB3 फॉर्म भरना पड़ेगा. सो इट इज सिमिलर टू L1B. उसके अलावा आपका जो ड्यूरेशन होता है वो L1A से 2 साल कम होता है. सो लाइक L1A हैज 7 years ओवरऑल टेन्योर, L1B हैज 5 years ओवरऑल टेन्योर. इनिशियल पीरियड में 3 साल और उसके अलावा रिन्यूअल ऑफ 2 years. सो 3 + 2 5 years. That is all about L1B. Now we'll cover the most important point, which is L1 visas for families.
L1 वीज़ा बहुत ही एडवांटेजेस होता है फैमिलीज़ के लिए. इट इज़ एब्सोल्युटली अनलाइक H1B, जहाँ पे H1B का जो डिपेंडेंट होता है वो H4 होता है, जबकि L1B का जो डिपेंडेंट होता है वो L2 वीज़ाज होते हैं. सो योर चिल्ड्रन एंड योर स्पाउस कैन बिकम L2 एंड दे कैन ट्रैवल अलॉन्ग विथ वी. ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है. So the day you land, from day one, your spouse and your children are with you. So that's the biggest advantage of L1. उसके अलावा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, so once you are a dependent of L1, you get EAD approval on day one itself. So the day you land in US, you get EAD approved. Unlike H1B. H1B जो आपका डिपेंडेंट होता है वो H4 होता है. So H4 को अगर काम करना है, if he has to start working, then they have to apply for I-140. I-140 का जब भी अप्रूवल होता है, then they can start with his probably a 18 to 24 month process. लेकिन L1 का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है that your EAD is approved. EAD क्या होता है? It's a working visa approval for your spouse. So as soon as you come in US, you can actually work from day one. ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है. So your EAD is approved and your spouse can work, which is your dependent, but they can start working from day one. That's the biggest advantage on L1 for families. So how to apply for L1 visa? So this process is initiated by your organization. Your organization, as the first step, has to fill in form I-129. So what is this form? ये form होता क्या है? Form I-129 is filled by your organization to the US administration, requesting that your loved ones will travel along with you and will move to US till the tenure of your L1 visa. That is where the I-129 form is submitted by your employer to US administration. Now there are various documents where your employer has to fill along with form I-129. So they have to show that your organization where you're residing, assuming that you're outside US. तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है और आपका ऑफिस है उसका और यूएस का लिंक क्या है, वेदर दे हैव अ ब्रांच इन यूएस, वेदर दे आर सेटिंग इट अप, वेदर दे हैव एन ऑफिशियल understanding of working. So this is one document which will be submitted by your employer. The second document is your expertise. So आपका specialist knowledge क्या है, आप managerial हो क्या, आप executive हो क्या, all these documents will go along with that. And the third and the most important document is what is the business reason. So if your organization is sending you to US on L1, there has to be a business reason that there is lack of this resource, you need this resource, there is a project for you in US. So that business reason is one of the important documents that your organization has to give to US administration. Now once this petition is approved, it comes back to the employee to fill all the DS-160 form for self and for dependents and pay the fees as the next step. Once the DS-160 form is filled for yourself and for your family and submitted, the next step is setting up an interview with the US Embassy. So US Embassy के साथ आपका interview होता है जहाँ पे आपको आपका passport carry करना पड़ता है. The offer letter given to you by organization, you need to carry that as well. And you also have to take proof of qualifications, like you're a specialist knowledge guy, you're a managerial guy, you're an executive person, what technology and all that. Now once the interview is done with the US Embassy, the documents are checked, it is reviewed and it is approved, you are all set to travel to US on your L1 visa. So now you're a L1 visa holder. Depending upon your eligibility, qualification, experience, you might be a L1A visa person or a L1B person, but you are all set to travel to US. So guys, I tried to did my best to cover the basics and few very important details of L1, its different types, advantages, what it means to families, so on and so forth. But if you still think I have not covered few points and you think you want some answers from me, please hit your comments and let me know. I'll be more than happy. Hope you have liked this video, and if you have liked this video, please hit the like button and comment and subscribe to my channel, The US Immigrant. I would love to make some valuable and relatable videos for you going forward. Please let me know if I've covered few pointers or you want me to cover some more. आप मुझे comment कर सकते हो. Just to let you know, जो पहली बार आज देख रहे हैं, this video is actually a result of a comment that I received from one of my subscriber. So एक subscriber थे यहाँ पे जिनके लिए मैंने वीडियो बनाया और उसके लिए उनके रिक्वेस्ट को ऑर्डर करते हुए मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे उनको L1B के बारे में जानना था. अब उनको सिर्फ L1B के बारे में जानना था, लेकिन आप बाकी के जो ऑडियंस हो उनको शायद L1, L1A, ओवरऑल L1B शायद उनकी ज़रूरत पड़ सकती है. तो इसलिए मैंने एक ओवरऑल L1 का स्ट्रक्चर बनाया, एक वीज़ा कैटेगरी की स्ट्रक्चर बनाई और मैं आपको समझा रहा हूँ. आई रियली नीड योर सपोर्ट, एंड इफ़ यू थिंक दैट दिस वाज गुड बट आई स्टिल नीड
some more details, मुझे और भी जानकारी चाहिए, मुझे और भी डिटेल में व्यू चाहिए, so you can go to my website theusimmigrant.com, मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप मेरे वेबसाइट पे जाइए। मैंने बहुत सारे डिटेल ब्लॉग्स और आर्टिकल्स लिखे हैं यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कवरिंग लॉट्स ऑफ पॉइंटर्स, so you can please go and have a go at it. With that, thanking you to stay with me till the end, till this point of time of the video. I will see in the next video. Till then, bye bye.